Friends, I had dreamed of this day for years. The day I finally start my All India art expedition on cycle. But what happened on day one was beyond anything I could ever imagined. I thought it would be simple, pack, ride, paint. Instead, day one tasted my body, my plan, and my faith in people. I woke up early, filled with excitement, but packing became a battle. I loaded everything on my cycle. The cycle trembled, swayed in every direction. I felt impossible. So I stopped. I unpacked everything and repacked again, still too heavy, nearly 100 kgs. Finally done, I headed towards India Gate from Saket. कैसे हो भाई? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? साइकिल से घूम रहे हो? हाँ साइकिल से पूरा इंडिया घूम रहे हो क्या? हाँ अच्छा, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ। इसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है? मतलब पेंट क्या मतलब नहीं समझा हम। मतलब इसका जैसे- पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाओगे आप? घूमने का वैसे हम लोग का भी बहुत शौक है, लेकिन क्या करें, घर परिवार जिम्मेदारी में फंस के रहेगा। आप वहाँ पे देखा खड़ा हुआ, मुझे लगा कि मतलब घूमने वाले ही आप। सही है सही। बहुत तो अच्छा। आप यही के हैं? नहीं, मैं बिहार से हूँ, लेकिन यहाँ पे ये गाड़ी चलाता हूँ, काम सही करता है। हूँ, अच्छा पार्सल डिलीवर करता हूँ। हाँ मैं यहाँ इंडिया गेट जा रहा हूँ। इंडिया गेट इंडिया से गेट के पास में ही है तो जाओगे। कहाँ से? उधर से इधर? हाँ नहीं, इधर जाओगे ना, इस हाँ। साइड में है इंडिया गेट, इस साइड में। वही ठीक है, थैंक हो यू। गए। बहुत अच्छा लगा भाई। हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज फोटो क्लिक कर दो ना भैया के साथ। कौन सा चैनल आपका? कोई आपका आपका- चैनल आपका? हाँ। बहुत बढ़िया बढ़िया बनाइए भाई आप। हम लोग क्या जहाँ पे काम कर, जहाँ पे आप पैदा हुए वहाँ देख लिए, जहाँ कमाने का घूम लिए और जिंदगी खत्म। हाँ नहीं यार, ट्रैवलिंग तो मुझे पसंद है, ट्रैवलिंग अच्छा है, बहुत ट्रैवल जरूरी करना है है। भाई। अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। एक फोटो लेना भाई के साथ है। After 18 kilometers, I reached India Gate. I took a deep breath. This was it, the official start of my All India Cycle Art Expedition. आज से शुरुआत हुआ ही है, हाँ पूरा सेटिंग बना हुआ हाँ। है। गजब का। People were asking me a lot, so I created a handwritten board and clamped on the cycle. ये हो गया, मस्त हो गया। अब आपको ना कई सारे जवाब नहीं देने पड़ेंगे। But very soon reality stuck. I hadn't eaten lunch. Rushing only to start on time, I just wanted to reach India Gate from Saket and start the journey as soon as possible. By the time I reached Sarita Vihar, it was already 8 p.m. I guess. I took some rest by a petrol pump, barely able to move. There was a challiwala, a boiled corn seller. I ate one for ₹40. I sat there for a long time. Even I felt I should pitch my tent there and sleep. But the corn sellers nearby were drinking alcohol and I didn't feel safe to stay there for the night. So I gathered my last bits of energy and moved on. I was worried about where I would stay at night. And then something magical happened. Some people stopped me and asked me where I was going and what's my tour about. They took selfies. One of them was a Rajasthani man. भरतपुर जिला भरतपुर। यस। आपका नाम क्या है? संजू सिंह। संजू सिंह and he offered me some namkeen. He's Placed many packets of namkeen into my bag. He said, जिला भरतपुर। यस। he said, whenever you feel hungry on the way, please eat this. And such a nice person. We are surrounded with this guy Santosh Kumar and this one Ajit Kumar. Then all left saying goodbye. I started riding again. One of a person I had just met before was waiting for me on his bike. His name was Santosh. He was holding 1,000 rupees in his hand. He offered it to me. बाकी मेरे पास नहीं है, कुछ ऐसी छोटी मोटी नौकरी है मेरी, ठीक है, लेकिन वो वही मंकी वगैरह का जो है मैं यूट्यूब वगैरह डालता हूँ। हाँ तो हेल्पिंग वही करता हूँ मैं, तो थोड़ा सा मुझे जानवरों से ज़्यादा प्यार है। हाँ। ठीक है, और कभी ज़रूरत हो तो आप फ़ोन कर दीजिए, 1500 में कर सकता हूँ। नहीं ठीक है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितना बाकी आपने मैं वहाँ नहीं, मेरे को सब अच्छा नहीं लगता ना उनके हाँ पास। हाँ तो ये नंबर अपना इसमें सेव कर दीजिए, कभी ज़रूरत हो आप मिस कॉल मार लीजिए, कभी ज़रूरत हो 1500 की मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, जब आपको कभी ज़रूरत हो, अगर इमरजेंसी में कभी ऊपर वाला ना कभी ऐसा करे तो जो है 1500 की हेल्प मेरे से हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। A man with little of his own, waiting just to hand me his hard-earned money privately so I wouldn't feel bad. Friends, imagine this. हाँ जी। ओके। Humanity itself stood before me
in the form of strangers. As the night grew darker, I felt completely drained. ना मंदिर में रुक जाओ फिर अंदर, क्योंकि ये एरिया बेकार है यहाँ का। अगर यहाँ कहीं लगाओगे ना तो यहाँ दिक्कत है तुम्हें। अंदर यहाँ से इस गली से अंदर लोगे ना, मंदिर है, मंदिर में रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अंदर जाओगे, मेन मंदिर है बदरपुर का। We reached to the temple. It was nearby. Helped me to get a place for night. After that, he even walked with me to nearby hotel in case they were open. After dinner, I went back to the temple. There, I found everything: electricity, washrooms, even drinking water for free. I charged all my devices and took a bath because I was stinking with sweat and feeling so hot. I washed my clothes and finally I slept. That night, as I drifted to sleep, one truth echoed in my heart. I may be cycling alone, but I am not alone. Across this journey, the kindness of strangers will carry me forward. I started this journey on my own, but I did not ride alone. This was just day one of my expedition. If you believe kindness still exists in the world, share this story because this journey is not just mine, it's belong to all of us.